Hello aspirants and welcome to the EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 2nd February 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about India's millet revolution. Now this article is not based on any news, but actually ये based है एक editorial में which was seen in the Hindu newspaper, which says about the task for India's millet revolution. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि why this particular crop is important for us. और यहाँ पे जो ये article है mostly speaks about or discusses the barriers in millet consumption in India, or what are the hindrances that are acting in the way of being millet a successful crop of India. ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. और मिलेट जो है, इट इज बेसिकली अ क्रॉप, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. तो इट बेसिकली टेक्स अप एग्जांपल्स लाइक यू कैन टॉक अबाउट द बाजरा, देन ज्वार, रागी. सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिलेट. इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ द फैक्ट्स कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड आल्सो फ्रॉम मेंस. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू. So the FAO, that is the Food and Agriculture Organization of the United Nations. तो ये जो organization है, it is an agency of the United Nations only, which is headquartered in Rome, Italy. Now it has decided that ये जो current year है, that is 2023. Now it will be the International Year of Millets. Now this actually is a step which has been done by the push of India only. So India had actually proposed this particular year to be the International Year of Millets in the UNGA. ठीक है, तो इसीलिए इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है. So millets, देखिए what makes it special. So millets have special nutritive properties. They are high in protein and dietary fiber, micronutrients and antioxidant as well. And also they have got some special agronomic characteristics. अब देखिए agronomic characteristics में हम अगर बात करेंगे, then you should know that it is drought resistant in nature and also it is suitable for semi-arid region. तो normally यहाँ पे आप देखोगे जो भी हम crops consume करते हैं, so most of them you will find that they are water sensitive in nature. तो उनका जो water requirement रहता है वो काफी ज्यादा रहता है. But this particular millet जो है, you should understand that they are drought resistant in nature and also they are suitable for semi-arid region. ठीक है. एंड इंडिया के केस में यूल फाइंड देयर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ मिलेट. एक हो गया मेजर एंड दूसरा हो गया माइनर. द मेजर मिलेट इट इंक्लूड्स द सोरगम, देन पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट. ठीक है, फिंगर मिलेट इज रागी. वेल द माइनर मिलेट जो है बेसिकली इंक्लूड्स द फॉक्सटेल, देन लिटिल मिलेट, देन कोडो, प्रोसो एंड द बार्नहेड मिलेट. सो इंडियाज मिलेट रिवोल्यूशन का अगर हम बात करेंगे तो इट इज बेसिकली ड्रिवन बाय द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ द मिलेट. तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको अबाउट दिस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. सो दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल हाई इन प्रोटीन एंड द डायटरी फाइबर एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो दिस एक्चुअली मेक्स द ये जो मिलेट है, इट बेसिकली मेक्स इट लाइक क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ एंड ऑल्सो इट हैज गॉट द एनवायरमेंटल बेनिफिट बिकॉज यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो मिलेट है, सो मिलेट एक्चुअली इट कंज्यूम्स लेस ऑफ water, right? So as well as efforts to revive the traditional agricultural practices, normally जो organic farming या natural farming का बात करते हैं, and support small scale farmers as well. It is seen as a solution to the country's dual challenges of improving public health and promoting sustainable agriculture. So in दोनों ही केस में you'll find that millet actually plays a very important role in improving the public health through the various characteristics of millet, and also by being, you can say, because it consumes less of water, so in this case it also promotes sustainable agriculture. Now finally, if we learn about millet, so millet you should know that it is a collective term, which is referring to a number of small seeded annual grasses that are cultivated as grain crops. So इसे cultivate किया जाता है as a grain crop primarily on marginal lands in dry areas. So you can see that these are normally, as I told you, कि ये जो drought areas में या आप कह सकते हो कि drought situations में भी we can cultivate it. So normally you will find the water requirement is quite low and as such it can be grown in the dry areas in temperate, subtropical and tropical regions. So normally हम जो crops सब depend करते हैं, so you'll find wheat is a temperate crop, rice is a tropical crop, but this particular millet is quite suitable or feasible, can be grown, or you can say it is quite a versatile crop because it can be grown in temperate, subtropical and tropical regions as well. Okay, and some of the common millets that we use in India are ragi, as I told you, finger millet, it's a very important millet. Then sorghum jo is actually jowar. Okay, so jowar ko sorghum kaha jata hai, and also sama, that is little millet. Then bajra, that is pearl millet. Okay, jo pearl millet है इसे bajra kaha jata hai. Rajasthan is a very major producer of this bajra. And also variga, which is a proso millet. Okay, so these are the common millets that are found in India. This is the picture. Okay, obviously you will not be asked कौन सा क्या है. The earliest evidence of these grains has been found in Indus Valley civilization as well. Okay, तो Indus Valley का हम बात करेंगे, which is a part, which is a very important section of the our ancient Indian history. तो यहाँ पे आप देखोगे normally हम जब यहाँ पे बात करते हैं agriculture के बारे में, so we actually hear about the rice husk. ठीक है, तो rice husk जो है यहाँ पे rice का evidence बहुत कम पाया जाता है actually, और rice husk जो है वो बहुत limited
साइड में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल लोथल में पाया गया था, राइट। तो इस केस में अगर आप देखोगे मिलेट जो है ना, मिलेट यूज्ड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट क्रॉप इन द IVC एज वेल, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वेल। इट इज ग्रोन इन अबाउट 131 कंट्रीज में इसे ग्रो किया जाता है, एंड इज द ट्रेडिशनल फूड फॉर अराउंड 60 करोड़ पीपल इन एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड एशिया एंड अफ्रीका आर ऑल्सो द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मिलेट। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। You should know that these facts are very important for the prelims, and also it accounts for 20% of the global production, ठीक है। तो entire world में जितना मिलेट प्रोड्यूस होता है उसमें से 20% जो है alone इंडिया प्रोड्यूसर्स है, एंड 80% एशिया का जितना प्रोड्यूस होता है 80% बस इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे इंडिया के बाद द नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोड्यूसर यू विल फाइंड लाइक देयर आर कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, चाइना, राइट। सो दे आल्सो प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिलेट, बट यू शुड नो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड इज इंडिया ओनली, ठीक है। और इंडिया की केस में अगर हम बात करेंगे, देयर आर 3 स्टेट्स, नेमली राजस्थान, यूपी एंड हरियाणा, ठीक है। तो ये जो राजस्थान, यूपी एंड हरियाणा, जहां पे यू ऑलरेडी नो कि दे ऑलरेडी फेस द वाटर स्कैरसिटी का इशू, ठीक है। यहाँ पे जो पानी है, पानी काफी कम रहता है, या दे ऑल्सो फेस सिचुएशंस लाइक रेनलेसनेस, बट स्टिल यू विल फाइंड द स्टेट्स दैट इज राजस्थान, यूपी एंड हरियाणा, दे अकाउंट फॉर मोर देन 81% शेयर इन द टोटल मिलेट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड राजस्थान, यू शुड नो, इट कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ द टोटल मिलेट प्रोडक्शन इन इंडियाज टोटल मिलेट, मतलब जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं ना उससे हाफ जो है 50% जो है वो राजस्थान अकेला प्रोड्यूस करता है। So let's look at the significance of millet as the nutritional. I've already told you about the climatic, about the economic characteristics and the dietary characteristics. Now let's look at some more importance. तो यहाँ पे बताया गया about the climate resilient staple food crop. So millet, as I told you, it is drought resistant. तो जो water requirement है वो काफी कम रहता है, require less water and can grow in poor soil conditions as well. So this makes them a suitable food crop for areas with unpredictable weather pattern and water scarcity. तो जहाँ पे पानी कम है, as I told you, for places like Rajasthan, UP, Haryana, in those places you will find the production of millet. So rich in nutrients as well, as I told you, they are also good source of the dietary fiber, then protein, vitamins and minerals as well. They are also gluten free in nature, ठीक है। तो यहाँ पे जो the minerals है, they are naturally gluten free, making them suitable for people with celiac diseases or gluten intolerance. Adaptable, so millets can be grown in a variety of soils and climate, as I told you कि अगर मान लीजिए कि tropical हो गया, temperate हो गया, so like any kind of climate में इसे हम grow कर सकते हैं, and in mostly all the kinds of soil में, making them a versatile crop option for the farmers. And if you see, this is also sustainable in nature. So the millets are often grown using the traditional farming method. So traditionally हम यहाँ पे जो natural farming use करते हैं, like without the use of pesticide and chemicals, तो यह सब जो हम use करते हैं, तो without the use of fertilizer, तो इसे हम ग्रो कर सकते हैं. So this is a quite benefit of the production of millet, which are more sustainable and environmental friendly than modern industrial farming practices. ठीक है. And as I was saying that India, Nigeria and China, याद रखिएगा, these are the top 3 producers of millet in the world. But there are again certain constraints, certain challenges in the millet cultivation and consumption. So पहला ये बताया गया about the decline in the area under millet cultivation. So millet देखिए was earlier cultivated in an area of 35 million hectare. तो देखिए जब डिमांड कम रहता है कोई चीज़ का, ऑब्वियस सा बात है, उससे उसका जो ग्रोथ है या जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम रहता है. तो पहले के केस में यहाँ पे 35 million hectares of land was used for the millet cultivation, but it is now being grown in only 15 million hectares. ठीक है. तो जो land coverage है of for millet under millet coverage or under millet cultivation, it is actually decreasing. The reason for a shift in land use includes low yield. ठीक है. तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम रहता है. Plus you will find that it also takes a lot of time. ठीक है. It is quite time consuming to grow millet and also laborious in nature, laborious task in the process of millet which are undertaken by women. Okay. And also you will find that they have got a low productivity of millet. Over the last decade, the production of sorghum, that is jowar, has fallen. The production of pearl millet जो है, that is बाजरा. ठीक है. बाजरा को याद रखिएगा, बाजरा को कहा जाता है pearl millet और jowar को कहा जाता है sorghum. अब ये जो sorghum का production है, it has fallen, and the production of pearl millet है, it has not fallen but it has stagnated. ठीक है. ये बढ़ नहीं रहा है. And also the production of other millet, including the finger millet, that is ragi, has stagnated or declined as well. ठीक है. And there is quite lack of awareness. अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि about the health benefits, ऐसा होता है कि most of the people they actually are not aware of the benefits. ठीक है. कि यहाँ पे जो प्रोटीन कंटेंट है या जो यहाँ पे जो डाइटरी बेनिफिट है, तो ये न्यूट्रिशनल बेनिफिट लोगों को पता नहीं होता है. सो मेनी पीपल इन इंडिया आर नॉट अवेयर ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट लीडिंग टू द लो डिमांड. और लो डिमांड की वजह से यहाँ पे जो लैंड कवरेज है फॉर द अंडर द मिलेट कल्टिवेशन इज एक्चुअली रिड्यूसिंग.
and also the high cost. So millets are often priced higher than the traditional cereals, ठीक है, so making them less accessible to the low income consumers. And also you should know that some people believe that millets जो है ना उनका जो taste है काफ़ी bland होता है, ठीक है, that millets have a bland or an unpleasant taste which basically it discourages them from consuming them, and hence also it calls for the low demand of the millet in India. So this is some information that I've included about the millet. So you should know that millet जो है they are small grain cereals, ठीक है, और climatic conditions यहाँ पे you should know that it is mainly a kharif crop. आपको पता होगा कि इंडिया में 3 तरीके का क्रॉप हम ग्रो करते हैं, खारिफ, रबी एंड जायद. तो दिस बेसिकली कम्स अंडर द खरीफ क्रॉप, और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा रहता है. रेनफॉल रिक्वायरमेंट एज आई टोल्ड यू, रेनफॉल रिक्वायरमेंट अगर कम भी होता है कोई दिक्कत नहीं है. इट इज क्वाइट फिजिबल टू ग्रो द मिलेट. एंड ऑल्सो सॉइल टाइप, इट इज इन्फीरियर एलुवियल और लोमी सॉइल. नॉर्मली आप देखोगे यू कैन बेसिकली ग्रो इन almost all the types of soil that are present in India, and this is the map of India where you will find the millet cultivation. नॉर्थ ईस्ट के केस में आप अगर देखोगे तो मिलेट का कल्टिवेशन काफी कम रहता है, बट अगेन you will find cultivation of millet in Meghalaya, ठीक है. और as I was saying about the current year जो है that is 2023, it is the international year of millet. याद रखिएगा, it's proposed by India and declared by basically proposed किया गया था by UNGA, और हाल ही में इसे डिक्लेयर किया है FAO, that is the Food and Agricultural Organization. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, kindly answer in the comment section. The next article is about the report called the World Economic Outlook. Now this has been published by the IMF, that is the International Monetary Fund. अब ऐसे जो रिपोर्ट है ना, you should know that these are very important, ठीक है, because एग्जाम में आपको पूछेगा प्रीलिम्स में कि ये कौन पब्लिश करता है, ठीक है. तो लास्ट मैंने कवर किया था अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, एंड ऑल्सो सच ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक, IMF. तो ये क्या क्या रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जस्ट मेक श्योर यू गो थ्रू इट, सो दैट इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम इट यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है. तो अभी देखिए न्यूज क्या है. रिसेंटली द IMF हैज रिसेंटली रिलीज्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. अब ये जो रिपोर्ट it is actually an update, ठीक है. तो यहाँ पे अपडेट पब्लिश किया गया है by the IMF, which is the World Economic Outlook update, which has marginally improved the forecast. तो जितना forecast पहले किया था in the original report, अभी उसे रिवाइज करके this improved the forecast for global growth in 2023. ठीक है. तो we'll look at this news which can be important for our prelims and also from mains. It can be important from GS paper, important international institution point of view. It has been taken from the Hindu. तो देखिए हम यहाँ पे जानेंगे कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो अपडेट है यहाँ पे क्या क्या चीजें बताया गया है, ठीक है. तो पहला बताया गया है अबाउट द ग्लोबल ग्रोथ विल बॉटम आउट, ठीक है. सो द ग्लोबल ग्रोथ व्हिच वाज एस्टिमेटेड एट 3.4% in 2022 is now projected to be 2.9% in 2023, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे जो करंट ईयर है, तो करंट ईयर का आपको कहानी पता है अबाउट द वेरियस कन्फ्लिक्ट दैट आर ग्रोइंग अराउंड द वर्ल्ड, अबाउट द रिसेशन के बारे में. तो इसी कारण से यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो आप देखोगे जो ग्रोथ है दैट इज द ग्लोबल ग्रोथ, तो ये 2.9% थी बस यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, बट देन अगेन इट विल राइज टू 3.1% इन द ईयर 2024, ठीक है. सो करंट ईयर में अगर हम बात करेंगे, इट हैज बीन प्रोजेक्टेड दैट द ग्लोबल ग्रोथ विल बी 2.9% एंड ऑल्सो इट विल बी राइजिंग टू 3.1% इन द नेक्स्ट ईयर. एंड द IMF इफेक्टिवली रूल्स आउट द ग्लोबल रिसेशन. तो ग्लोबल रिसेशन ऐसा माना जाता है, द IMF बिलीव्स दैट देयर विल बी नो देयर विल नो काइंड ऑफ ग्लोबल रिसेशन इन द करंट टाइम और इन द अपकमिंग टाइम्स. राइट. सो अगर हम बात करेंगे अबाउट रिलीफ के बारे में, देयर इज लाइक क्वाइट रिलीफ ऑफ द इन्फ्लेशन विल बी स्लोअर, ठीक है. अब देखिए इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन का बात हुआ है, दैट इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव पीक्ड इन 2022, ठीक है. तो हमें आपको बताइए होगा कि ये जो दाम है ऑफ लाइक ऑल द कमोडिटीज अराउंड अस, तो कितना दाम बढ़ रहा था, ठीक है. तो ये प्राइसेस का जो इंक्रीज होता है लेवल, जो ये जनरल प्राइस लेवल है, जब इंक्रीज होता है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं. तो माना जाता है, ये रिपोर्ट का मानना है कि ऑलरेडी लास्ट साल में इन्फ्लेशन ने पीक कर दिया था, ठीक है. बट द डिसइन्फ्लेशन विल बी स्लो एंड टेक ऑल ऑफ 23 एंड 24. मतलब नॉर्मल रेंज में आने के लिए अभी 23 एंड 24 ईयर्स विल बी टेकन, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर है, द प्राइसेस विल कम टू अ नॉर्मल लेवल. ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि द प्राइसेस विल गो डाउन, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डिफ्लेशन होगा. देखिए आपको यहाँ पे जानना चाहिए अबाउट डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के बारे में. डिफ्लेशन क्या होता है, प्राइसेस कम होना, ठीक है. और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इट इज अ टेम्पररी स्लोइंग ऑफ द प्राइस इन्फ्लेशन एंड इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंस्टेंसेस व्हेन द इन्फ्लेशन रेट हैज रिड्यूस्ड मार्जिनली ओवर द शॉर्ट टर्म, ठीक है. लेकिन ऑन द अदर अगर हम बात करेंगे डिफ्लेशन के बारे में, तो डिफ्लेशन मींस प्राइसेस आर फॉलिंग, ऑलराइट, एंड द इन्फ्लेशन रेट इज इन नेगेटिव. लेकिन डिसइन्फ्लेशन में यहाँ पे जो रेट होता है, तो वो रेट नेगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही होता है, बट स्लोली आप देखोगे इट इज ग्रेजुअली कमिंग टू द नॉर्मल लेवल, ठीक है. वेल disinflation you should know it means a slowdown in the rate of inflation while still remaining in the positive, ठीक है. यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जितना इन्फ्लेशन हुआ था वो कम होते आ रहा है, तो इसको कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन. और डिफ्लेशन क्या होता है, इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट, जब दाम कम होता है.
राइट एंड उसके बाद ये बताया गया है अबाउट द हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में. अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? इज अ मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग कमोडिटीज सच एज फूड, सच आप यहाँ बात कर सकते हैं अबाउट द फूड एंड एनर्जी प्राइसेस के बारे में. ठीक है, तो आप देखोगे नॉर्मली जब दाम बढ़ता है ना तो सबसे पहले यहाँ पे हिट करता है, अफेक्ट करता है एनर्जी प्राइसेस, जैसे कि पेट्रोल पे अफेक्ट करेगा. जैसे कि आपको पता ही है कि करंट टाइम्स में पेट्रोल का दाम कितना ज्यादा बढ़, लाइक इट इज क्वाइट इन द हाईएस्ट लेवल करेंटली, है कि नहीं. तो ये जो फूड प्राइसेस है और एनर्जी प्राइसेस है, यू विल फाइंड ये सबसे जल्दी हिट होता है. ठीक है, तो इसी को कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन. सो अबाउट 84% ऑफ द कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर हेडलाइन और द कंज्यूमर. ठीक है, अब इंडिया के केस में सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इट विल बी इन 2023 देन इन 22. ठीक है, सो माना जाता है कि 84% जितना भी कंट्रीज है, तो आउट ऑफ देम 84% ऑफ द कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोअर हेडलाइन इन्फ्लेशन. ठीक है, एंड ऑल्सो if you look at the global inflation के बारे में, so global inflation is set to fall from 8.8% in the last year में, यहाँ पे जो inflation था 8.8%, तो ये माना जाता है कि in the current year में it will be dropping to 6.6%, and finally जो global inflation है it will like drop till 4.3% in 2024. ठीक है, so last year ये काफी ज्यादा था, as I already told you it has already peaked. तो peak cross करने के बाद it is currently like the यहाँ पे figures है it is currently declining, so above the pre-pandemic level. So pre-pandemic का हम बात करेंगे 17 से 19 में, so it was about 3.5%. तो ये माना जाता है कि in the upcoming 2 or 3 years the figures will be coming close to the pre-pandemic levels only. Okay, and also you should know ये जो price rise है, so price rise is slowing for mainly two reasons. ठीक है, price rise तो obviously हो रहा है, लेकिन slow क्यों हो रहा है? Because IMF ने बताया कि price rise हो रहा है लेकिन slowly हो रहा है. ठीक है, मतलब जिस तरीके से पीक हुआ था ना तो वो कम हो रहा है अभी. तो ये इसीलिए कहा गया है because one is that the यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है अक्रॉस द नेशंस. ठीक है, सो द मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो द यू विल फाइंड द कंट्रीज आर अडॉप्टिंग क्वाइट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, सो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, जब आप लोन ऑफर करते हो देन यू विल बी ऑफरिंग द लोन्स एट अ हायर इंटरेस्ट. ठीक है, और अब हायर इंटरेस्ट में अगर आप लोन अगर ऑफर करते हो, ऑब्वियस सा बात है जो डिमांड है वो कम हो जाएगा. राइट, सो इट विल बी जो यहाँ पे डिमांड लेवल है इट विल बी ड्रैग डाउन. ठीक है, सो द डिमांड लेवल फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी ड्रैग डाउन एंड दैट इन टर्न विल स्लो डाउन द इन्फ्लेशन. तो एक तो हो गया कि यहाँ पे द कंट्रीज और द नेशंस आर अडॉप्टिंग टाइटर मनी पॉलिसी. टू, इन द यहाँ पे जो सेकंड केस है इट इज इन द वेक ऑफ द फॉल्टरिंग डिमांड. ठीक है, जो डिमांड कम हो रहा है, द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज बोथ फ्यूल एंड नॉन फ्यूल. ठीक है, जो यहाँ पे फ्यूल का जो कंजम्पशन है और नॉन फ्यूल कंजम्पशन है, नाउ दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एंड दिस इज बेसिकली लेड टू दी you can say this has basically led to the slowing of the price rises across the world, right? तो चलिए जान लेते हैं अबाउट IMF एज वेल. IMF दैट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. अब ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन दैट इज IMF और वर्ल्ड बैंक, ये साथ में फॉर्म हुए थे. तो इनको ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा गया था बिकॉज ये फॉर्म हुआ था थ्रू अ कॉन्फ्रेंस एट ब्रेटन वुड्स. ठीक है, सो द IMF वाज सेट अप अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर टू असिस्ट इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉर रेवेज कंट्रीज. तो आपको पता होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे जितने भी सारे वर्ल्ड वॉर्स थे, फर्स्ट एंड द सेकंड, तो इसमें काफी इकोनॉमिक लॉस हुआ था द नंबर ऑफ कंट्रीज एंड ऑल्सो विच इज रिफ्लेक्टेड इन द ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है, तो इसी ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को रीइंस्टेट करने के लिए ऑल्सो टू हेल्प इट रिकवर, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये फॉर्म हुए थे. द टू ऑर्गेनाइजेशन एग्रीड टू बी सेट अप, दैट इज द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF. सो दे एग्रीड टू बी सेट अप एट अ कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड. ठीक है, इन द US एंड हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज द ब्रेटन वुड ट्विंस. अब यू शुड ऑल्सो नो दैट ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, तो दिस आर ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड एट वाशिंगटन DC. राइट, so they were created in 1944. The IMF is governed by and accountable to the 190 countries that make up its near global membership. Okay, there are almost all the countries are member of this particular organization. India joined on 27 December 1945. That is right after the year's formation. The form was 1944 में 1945 में से India join किया था. The IMF's primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system. Okay, the system of exchange rate and the international payments that enable countries and their citizens to transact with each other. तो अगर हम रिपोर्ट्स का बात करेंगे, अब देखिए IMF ऐसा नहीं है कि दिस आर ओनली 2 रिपोर्ट्स बट देयर नंबर ऑफ देम, बट एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो द रिपोर्ट्स दैट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड दैट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड ऑल्सो द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली आस्क्ड इन द UPSC. ठीक है, सो दिस इज अ प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, काइंडली अटेम्प्ट इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो देयर आर 2 more questions based on the same topic, kindly answer in the comment section again.
So the next festival is from the state of Arunachal Pradesh about the Day Festival, for which the governor has basically forwarded the greetings for this particular festival. And also the news says that the Day celebrated with the traditional gaiety, and also the CM, there is the Chief Minister Pema Khandu ji has also hailed the rich culture of the particular community who celebrates it. तो इसी के बारे में बात करते हैं, which can be important for our prelims and also from mains it can be important for our GS paper one cultural point of view. It's been taken from the Arunachal Times. So the CM Khandu has said that EduMiles has much rich culture, which is more colorful and artistic than many cultures of the world. So basically, he has praised, he has appreciated the cultural, you can say, the ethos of the particular tribe that is EduMiles. And you should know, EduMiles is the community of the tribe which celebrates this Ray festival. So this बार जो celebrate हो रहा है, it is 55th Ray festival. So the CM, while attending the 55th Ray festival, so he has reiterated his emphasis on preservation and practice of the indigenous culture. So in the number of occasions, he has already spoken about the about how to preserve the languages and how to propagate the language among the younger generation. Speaking in the mother tongue is also very important so that they do not disappear under the influence of other major languages. So Dibang Valley is nature's gift to mankind. You also know about the various beautiful places in Dibang Valley. So this is the same place where the Ray festival is celebrated and where you will find the EduMiles tribe. Once the stretch of 20 kilometers, अब देखिए 20 kilometers एक रास्ता बन रहा है फ्रॉम रोइंग से लेके आंधेरी तक. तो एक बार जैसे ये बन जाता है 20 किलोमीटर का स्ट्रेच, देन डेफिनेटली जो यहाँ पे टूरिज्म है तो वो काफी बूस्ट होने वाला है. नॉट ओनली द ट्रेवल टाइम विल रिड्यूस बट ऑल्सो ऑफर स्मूथ एंड सिनिक कम्यूट ऑल अराउंड द ईयर. तो इस तरीके से जो टूरिज्म है अरुणाचल प्रदेश इट कैन बी बूस्टेड टू यू कैन से टू अ ग्रेटर हाइट. एंड ऑल्सो खांडू वाज ऑप्टिमिस्टिक दैट इन अ कपल ऑफ मंथ्स, like in a couple more years from now, Dibang Valley will become the most sought after tourist destination of the state, especially for nature lovers and adventure seekers. All right. So during the festival, local community offered prayers to Nani, Intaya, and Mashelo Jino. Now these names can be asked in our prelims. It's important for nature's blessing and for sustaining the village life. This topic here, business prelims practice question hai. Kindly answer in the comment section. So this was a question that I asked in the last video. Let's look at the answer. The first question is about India's first solar mission. It is Aditya L1. And the second question is about the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act of 2006. It is under the Ministry of Tribal Affairs. Some more questions that I asked in the previous video. Let's look at the answer. तो ये जो सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, इट इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश. एंड इफ यू लुक एट द आदि असमिया इंग्राजी हम्बादमा, देन इट इज रिटन बाय तागांग ताकी. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining and we'll meet the next one. Bye bye and take care.